Hello children. So today we are back with a video on trigonometry. Actually it is introduction to trigonometry. पहला चैप्टर है फर्स्ट टाइम आया है इनफैक्ट trigonometry आपके स्टडीज में. It's a way of studying triangles and angles and the ratio of their sides. बहुत इजी है, लोग करते हैं. trigonometry से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. You should be you learn it from scratch and you will be confident in this subject. Okay, so you need not worry at all. So in this particular video, I will introduce you to the terms like sine theta, cos theta, tan theta, and I will also tell you what are the relations between the different angles and the sides. Okay, so basically these names are very simple. अभी मैं यहीं पे रुक जाता हूँ because आगे वीडियो में आप समझोगे कि what is sine, cos, tan theta, secant, cosecant theta. उसके बाद आपको ये by the end of this video, I am sure you will be confident on at least understanding what is sine, cos, tan theta and what is trigonometry all about. So let us go ahead and start this video. So introduction to trigonometry is our class today. So trigonometry is all about three angles of a triangle and the ratios of the sides of the triangle. So let us begin. Let us start with right angle triangle because it is very easy to understand when we consider a right angle triangle because the ratios of sine, cos, tan are the ratios of the sides of a right angle triangle. So let's begin with some right angle triangle. What are right angle triangles? Right angle triangles are triangles which have some 90 degrees in it. देखो यहाँ पे in this triangle, can you see the 90 degrees? See here, this angle is 90 degrees. So any angle where you have one angle as 90 degrees, it is a right angle triangle. Okay. So you can have many kinds of right angle triangle. So this triangle is a scalene right angle triangle where all the sides and all the angles are unequal. Okay. You can have another right angle triangle. This looks to me like an isosceles right angle triangle because why I am calling it as isosceles right angle triangle? See, this side is equal to this side. And this angle as usual is our 90 degrees right angle. Okay. So I can say here this sides, these two sides are equal. So what follows if these two sides are equal? Even these two angles are also equal. In isosceles triangle, two sides are equal and two corresponding angles are also equal. So if these two are equal, what will be the size of these angles? 45, and this will also be 45. Clear? Because while trying to understand trigonometry, we should know 100% about right angle triangles. Okay. So there can be another right angle triangle of different shapes, So let us see this. This is also scalene right angle triangle, but it is standing. Okay. Then you can have a right angle triangle like this also, right? यहाँ पे I have not drawn it like this. I have tilted the right angle triangle, but it still has a right angle there. Here, it is also scalene right angle triangle. So you have to keep an eye on triangle. If you see 90 degrees, it's a right angle triangle. 90 degrees कब होता है? When two lines are perpendicular like this, like this, like this. किसी भी angle से देखो, these are 90 degrees. ठीक है? So this kind of triangle is called a right angle triangle. अब आगे चलते हैं. Go back. Okay. I need to actually wrap this off. Okay. Now this is our right angle triangle. Okay. Now here you see there's two angles. These two angles. These two angles. This one and this one are acute angles. They are less than 90, isn't it? If one is 90, the other two have to be less than 90 because sum of all the angles of a triangle is 180, isn't it? So this has to be acute. Okay. So now let's go ahead and see what. See, these two angles are acute. Okay. What are the other two? What is the other property of this right angle triangle? These two angles are complementary. Let me explain you this concept here. See, I said this was 90 degrees. So let this angle be A
and let this angle be B. ठीक है? So I can explain it like this. We know all the sum of angles of a triangle is equal to 180. So I can write A plus B plus 90 degrees is how much? 180 degrees. ठीक है? Now take this 90, transpose it that side. So क्या हो गया? A plus B is equal to 180 minus 90, which is equal to 90 degrees. So now we know that A plus B is equal to 90 degrees. Hence we say that these two angles are complementary. So जो angle होता है other than the right angle triangle, right angle, the other two angles उनका sum भी 90 degrees होता है. Clear? ये property याद रहेगी? Good. So let's go ahead and try to understand next property of a right angle triangle. Now, the sum of the squares of perpendicular sides is equal to the square of hypotenuse. What is this theorem called? Pythagoras theorem, right? If this side is A and this side is B, they are perpendicular sides, isn't it? They are perpendicular sides. So this is 90 degrees. ठीक है, दोनों sides के बीच में. तो the third side is hypotenuse. Third side is hypotenuse. We are denoting it with alphabet H. ठीक है. Now कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको समझा ही दिया, ठीक है. तो लेट अस अंडरस्टैंड वंस मोर. सबसे पहले तो हम इस चीज को कंप्लीट करते हैं. Now as I told you this, let us complete this one and let us write it here. So as I said, the sum of the squares of perpendicular sides. So let us write it. A square plus B square should be equal to H square. ये पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है, याद रहेगा नहीं? ठीक है. Now let us understand complementary once more time. I know you people are getting confused, so एक बार हम वापस इसे देख लेते हैं, ठीक है. Now see, मैं यहाँ पे कुछ ट्रायंगल बनाया हूँ 90 डिग्रीज के और ये भी 90 डिग्रीज के. If I say this angle is 30 degrees, right? Then what is the measure of this angle? कितना होना चाहिए? ये A है, ये B है, ये C है. So angle B तो 90 degrees है. This angle is how much? 90 degrees. And what I said, A and C are complementary. So समझ लो कि ये x है, ठीक है. So we can write it as x plus 30. मैंने बोला था A and C are complementary. That means A plus C will be equal to 90 degrees. Now A is x and C is 30. So this is equal to 90. तो x का वैल्यू कितना हो गया? 60. 90 यहाँ आ गया, माइनस हो गया 30. So value is 60. ठीक है. So if one angle is theta, the other angle is 90 minus theta. अगर मैं बोल दूं कि this angle 90 डिग्री को कभी मत कंसिडर करना. 90 is always there. Okay, 90 is always there. So if this angle is 30, if theta, so this angle is 90 minus theta. ठीक है. If this angle is theta, this angle will be बोलो 90 minus theta. Which one? This one. 90 minus theta, and you will always have a 90 degrees. ठीक है. So this is the property of right angle triangle. I hope you are understanding the complementary concept. समझ में आ गया? ठीक है. Let's move ahead. ठीक है. Let's move ahead. So अब राइट एंगल ट्रायंगल है. राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स का नाम दे देते हैं. सो इट इज इजी फॉर अस टू आइडेंटिफाई द साइड्स. अभी हमें कैसे बोलूंगा? खड़ी वाली साइड तो नहीं बोल सकता हूँ ना. सो इफ आई हैव एन एंगल थीटा हियर, assume that this angle name is theta. Theta is a Greek Latin alphabet. जैसे अल्फा बीटा गामा होता है, थीटा पाई साई सिग्मा डेल्टा, देयर आर सो मेनी अल्फाबेट्स. सो
हम ABC के नहीं लिखते हैं, एंड वी बिकॉज ABC वी यूज टू नेम द ट्राइंगल ओनली, लाइक इफ वी वांट टू नेम द साइड एज ABC, तो एंगल के लिए वी आर यूजिंग थीटा, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द नेम ऑफ द साइड्स। तो पहला साइड जो है हमारे लिए इज दिस वन AB, ठीक है। सो बिकॉज इट इज अपोजिट टू थीटा, लुक एट दिस इज थीटा एंड AB इज स्टैंडिंग अपोजिट टू थीटा, देखो यहाँ ठीक इसके अपोजिट में है, ठीक है। सो बिकॉज इट इज अपोजिट वी नेम इट अपोजिट साइड, क्लियर, याद रहेगा। सो इफ समबडी आस्क्स यू व्हाट इज अपोजिट साइड, सो यू शुड फर्स्ट सी द एंगल एंड ठीक उसके अपोजिट में जो साइड होगा दैट विल बी द अपोजिट साइड, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये साइड इसका नाम क्या है, एडजेसेंट साइड। व्हाई एडजेसेंट साइड, इट इज जस्ट एडजेसेंट, सी थीटा इज हियर and it is adjacent, there is one hypotenuse here and there is one adjacent and this is opposite, ठीक है। now you know why adjacent, because it is adjacent to that particular angle. now this side is also adjacent but इसका एक special name है, we know that it is called hypotenuse, isn't it? so let us go ahead and see that hypotenuse वाला concept. so this is hypotenuse, ठीक है। now let us pitch all the names in one stroke, ठीक है। hypotenuse, opposite side, adjacent side. So now you can draw in your book this triangle and name them. hypotenuse will always be opposite to 90 degrees, देखो ठीक है, इसके opposite में है ना, 90 degrees के opposite वाला side जो होगा that is hypotenuse, and the sides which are carrying 90 degrees are the perpendicular sides. So this is opposite side, this is adjacent side with respect to this angle theta, okay, with respect to this angle. If you consider this theta, then this will become opposite side. I will come to those things, but as of now, ये picture को मन में बिठा लो. Hypotenuse is the non-perpendicular sides. The perpendicular sides are opposite and adjacent. Then this is the hypotenuse. Is it clear? ठीक है? So let's move ahead. Now consider two similar triangles. ये अब कहाँ से आया था trigonometry? They consider two similar triangles, ठीक है। so ये पहले मैं यहाँ से इसको मिटा देता हूँ, ये चीज को मिटा देता हूँ, ठीक है, ये मिटा देता हूँ। so let us see पहला triangle, these are two similar triangles, both are having 30 degrees here, this is also is having 30 degrees, ठीक है, and this is 90. By a similarity, two triangles are similar, two triangles are similar, they are similar. Now 30 angle, this is a bigger triangle, this one is a bigger triangle, this one is a smaller triangle, ठीक है, both are similar. so कैसे करेंगे, अभी आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या चीज है इसमें, what I want to show you is that in two similar triangles when angle is constant, what are you observing here, what are you observing here, the ratio of opposite side to hypotenuse is 4 by 8, 4 by 8 cancel कर दो, it becomes 1 by 2, ठीक है। now see this smaller triangle, इसमें भी opposite side by hypotenuse is 1 by 2, isn't it astonishing? This is a bigger triangle, this is a smaller triangle, but ratio is same. मुझे पता है आप लोग को थोड़ा सरप्राइजिंग लग रहा है, ओके, so let's go ahead and see, इससे भी बड़ा triangle ले लेते हैं, let us take a even bigger triangle, ये भी 30 degrees, this time my triangle is even bigger, 6 and 12, the ratio is again 6 by 12, 1 by 2, देखो even now the ratio is standing as 6 by 12 which is 1 by 2. So whatever may be the size of triangle, they found that the ratio of opposite side to hypotenuse for a particular angle 30 was always constant. Then they also found that it is applicable to all angles. So if you have 40, 30, 10, whatever, they will be constant. So they wanted to give the name to this particular ratio, ठीक है।
समझ में आ गया ना? अब देखो, so they wanted the result, finally they concluded with the result. So for any given angle of a triangle, the ratio of opposite side to hypotenuse is always constant. हमारे पिछले वाले एग्जांपल में क्या था, दिस वाज जो एंगल 30 डिग्रीज था तो उसका अपोजिट साइड टू हाइपोटेन्यूज वाज हाफ, ठीक है। तो इसका नाम देना चाहते थे वो लोग, so if this is theta a b and h, तो रेशियो ऑफ अपोजिट साइड टू हाइपोटेन्यूज इज a by h, उसका नाम इन्होंने दे दिया sin थीटा, ठीक है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, ये लिख लो, copy this, pause the video, keep copying. Now there is another ratio of adjacent side b to h, b to h, पहले क्या था अपोजिट, पहले ये था अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, नाउ वी हैव दिस पर्टिकुलर थिंग एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, इसका नाम इन्होंने दे दिया cos थीटा, ठीक है। एक्चुअली दिस वाज कोसाइन, साइन एंड कोसाइन मैं आगे चल के समझा दूंगा, एज ऑफ नाउ बिकॉज यू आर टेकिंग नोट्स, बी वेरी प्रिसाइज, मैं वही चीज बताऊंगा जो आपको परमानेंटली याद रखेंगे, ठीक है। सो दिस इज cos थीटा, याद रख लीजिए आप, ठीक है। देन देयर इज अनदर रेशियो पॉसिबल, देखते हैं आगे चल के व्हाट इज दैट रेशियो। Same, we get our triangle. Now what is the ratio? A by B, which is opposite side by adjacent side, opposite side by adjacent side. So this is actually our A by B, ठीक है। यहाँ पे साफ नहीं दिख रहा है, so we can actually go ahead and do this thing once more. A, ठीक है, A by B. So clear? So what is the name of this particular thing? Tan theta or tangent theta, ठीक है, समझ में आ गया। So now you know sin theta, cos theta, tan theta. So let's summarize them. देख लें summarize करने से। So ये हमारे to need the time to know names of all possible ratios. हाँ, A by H देख लो, A by H, A by H is sin theta, B by H is cos theta, and A by B is tan theta, ठीक है। ये नोट कर लो आप लोग, then I will take you to the classroom session, वहाँ पे मैं I'll be writing and you will let us discuss in a robust form, ठीक है। So let's go ahead, कॉपी कर लिया आपने, कॉपी कर लो, पॉज करो वीडियो। Okay, so we have our triangle and we have our whiteboard. So let us name this triangle first. A, B, C. What is the right angle triangle here? Angle B is right angle triangle. Which are the complementary angles? A and C are complementary. ठीक है, A plus C will always be 90 degrees. So if I say this angle is theta, ठीक है, this angle is theta, so this angle will be always 90 minus theta. ये भूलना ही नहीं है आपको, if one is theta दूसरा is another 90 minus theta. If I say this is 15 degrees, तो ये कितना हो जाएगा 75, automatically this becomes 75 because this plus this is 90. If I say this is 30, then this becomes 60, right? If I say this becomes 45, then this is also 45 because 45 is 90. Clear? समझ में आ गया ये चीज है, ठीक है। Now let us see sin theta, cos theta, tan theta, ठीक है। So let me give the names as I was telling, A, B and H. This is 90 degrees, right? So सबसे पहले मैंने क्या बोला था, sin theta. Sin theta was what? A by H, ठीक है। Opposite side, because angle is here, angle बनाना जरूरी है because we have to find opposite to the angle. So A is opposite to this theta. देखो ध्यान से, A is opposite to theta, देखो ठीक इसके opposite में है, are you seeing? Right. Now since A is opposite to theta
and A by hypotenuse is sin theta. Now what is cos theta, children? Cos theta is B by H. Adjacent side divided by hypotenuse. Okay. Now let us see the third ratio. What is the third ratio? Tan theta. Tan theta was A by B. Easy है ना? तीनों रेशो समझ में आ गया? A by H, B by H, A by B. ठीक है. Now apart from this ratios, मुझे बताओ H by A भी तो एक रेशो है, which is ठीक इसका reciprocal, right? So I can write it as 1 by sin theta. क्योंकि sin theta is A by H, then H by A becomes 1 by sin theta. तो इसका नाम भी इन्होंने दे दिया कुछ cosec theta. Cosec theta. नाम समझ में आ रहा है? धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करने से आ जाएगा, याद हो जाएगा. ठीक है. सिमिलरली cos का रेसिप्रोकल देखते हैं. H by B is 1 by cos theta. secant theta. ठीक है. Similarly, tan का opposite P by A is also 1 by cot theta. Cot theta. Or 1 by tan theta. 1 by tan theta. इसका नाम इन्होंने दे दिया cot theta. ठीक है. So we have to remember what all things? Sin theta. ठीक है. Cos theta. Tan theta. And reciprocal of sin theta is cosecant theta. Reciprocal of cos theta is secant theta. And reciprocal of tan theta is cot theta. So these are the 6 ratios possible. और कोई ratio possible है? नहीं है. So trigonometry is all about the study of these ratios. ठीक है. Now let us see some few examples. Okay. So let us see few examples. Let me pull up a right angle triangle here for you. Suppose I give you this side is 3, 4, 5. Is it right? 3 square is 9, 9 plus 16, 5. So it is a Pythagoras triplet. Check कर सकते हो आप. 3 square plus 4 square will be equal to 5 square. 16 plus 9 is equal to 25, which is square of 5. ठीक है. Now, if I say this is my theta, if I say this is theta, now what is sin theta? Sin theta is opposite side by hypotenuse. क्या हो गया? बताओ. It is 3 divided by 5. Simple. Now tell me cos theta is adjacent side by hypotenuse. ठीक है. Which is how much? 4 by 5. And what is tan theta? Is opposite side divided by adjacent. I can write it as 3 by 4. समझ में आ गया? So see, we learned in this session, we learned the name of the sides, opposite side, adjacent side, and the hypotenuse. Now then we also learned the different ratios, 6 possible ratios. Primary ratios are 3: sin theta, cos theta, and tan theta. Then इसके reciprocals. So what is cosecant theta here? Cosecant is reciprocal of sin theta. So cosecant theta is actually 1 by sin theta. So sin theta is 3 by 5. Then cosecant theta is 5 by 3. Clear? Then secant theta. Secant theta is reciprocal of cos theta. So it will be 5 by 4. And what is cot theta? Cot theta is reciprocal of tan theta.
tan थीटा, ठीक है। सो इट इज 4/3, ठीक है, राइट, समझ में आ गया। सो साइन कॉस टैन बहुत इजी है करना। सो we will pause and try to bring up some questions and see if you can solve these questions, ठीक है। पहले we'll go with very basic questions and we will see whether you are able to solve this, ठीक है। So now actually let us see the what are the ratios with respect to the other angle of the triangle. So let us draw a right angle triangle once again. You will see a nice thing here, बहुत अच्छा सा रिजल्ट है। So this is our triangle, okay। Now let me name them A, B and H. Now if this angle is theta, what is the other angle? ये तो 90 है, हमें पता है, we don't have to touch this. If this is theta, this is 90 minus theta, याद रहेगा ना, कभी नहीं भूलना, because these two acute angles are complementary, ठीक है। One is 90 minus theta. So let us see what is sin theta. Sin theta is what? A by H, ठीक है। What is cos theta? B by H. And what is tan theta? Is A by B. यहां तक तो समझ में आ गया ना। अब ध्यान देखो, आई एम गोइंग टू आस्क, साइन तो दूसरे एंगल का भी हो सकता है, अदर एक्यूट एंगल का भी। साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, ये क्या होता है? 90 माइनस थीटा, so now we are talking of this particular angle, ये इस एंगल की बात कर रहे हैं, और ये एंगल के अपोजिट में कौन सा साइड है? B, क्लियर। 90 माइनस थीटा के अपोजिट में अपोजिट साइड इज B, so what I am going to do, I will write it as B by H, ठीक है। Now who is adjacent to 90 minus theta? इस एंगल के adjacent कौन है? इसके बगल में A है। cos थीटा क्या होगा? A by H, cos of 90 minus theta will be A by H, right? देखो समझ में आया ना कैसे हुआ ये? 90 minus theta, we are talking of this angle. Who is adjacent to this? This particular A, right? So cos theta is adjacent by hypotenuse, so it is A by H. Actually you have to tilt the triangle in your mind and see, समझ में आ जाएगा। Who is opposite to 90 minus theta? A, H. Now what is tan of 90 minus theta? Tan of 90 minus theta is B by A, ठीक है, B by A. Now see important result यहाँ पर देखो, बहुत ध्यान से देखना। See these two values. Whatever is sin theta and cos 90 minus theta is also same. See this is A by H and this is also A by H, है ना? So what we just found out? We found an important result, right? हमको क्या पता चल गया है कि sin of theta is always is equal to cos of 90 minus theta. समझ में आया? देखो वैल्यू सेम है, A by H है, दिस इज ऑल्सो A by H एंड दिस इज ऑल्सो A by H, दोनों इक्वल है ना, तो भी हमको रिजल्ट मिल गया, राइट। एक चीज और देखो आप ध्यान से, इस चीज को देखो, cos थीटा की वैल्यू इज B by H एंड sin 90 minus theta is also B by H. देखो ध्यान से, this is also B by H, this is also B by H, they are equal, so I can write cos of theta is equal to sin of 90 minus theta, है ना। B by H is equal to B by H, so I can write it like this, right? Now tan, और ये tan, ठीक है, तो ये tan of 90 minus theta है। So if you want to write what is cot of 90 minus theta, cot of 90 minus theta, tan and cot are reciprocal of each other, so this will become A by B. Now see, tan theta is equal to cot of 90 minus theta because both values are A by B and A by B, ठीक है।
So I can write the result. Tan of theta is equal to cot of 90 minus theta. बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है. दिस विल बी यूजिंग इन वन फुल एक्सरसाइज. ठीक है. नहीं समझ में आया तो पॉज द वीडियो, लुक एट दिस वीडियो अगेन एंड अगेन. ठीक है. ये कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर है. ठीक है. सो यू हैव रेशियोज ऑफ दिस पर्टिकुलर थीटा. व्हाट आर द रेशियोज? साइन कॉस टैन, कोसेकेंट, सेकेंट एंड कॉट. एंड रेशियोज ऑफ दिस पर्टिकुलर एंगल आल्सो, because it is also an acute angle. If you see the triangle like this, it also has a opposite side, it also has a adjacent side, it also has a hypotenuse. So you can define ratios of both the angles, 6 ratios of this angle and 6 ratios of the other angle. Okay. Now we'll do a small set of questions, so it will become very clear in your mind. Pause the video, take these notes. Okay. आप देखो, it's a question, it's coming from CBSE NCERT की बुक का क्वेश्चन है एंड इट्स द फर्स्ट एक्सरसाइज, फर्स्ट क्वेश्चन आई इट लुक्स लाइक राइट एंगल ट्रायंगल बी ABC is a right angle triangle, right angle at B. तो पहले लेट अस ड्रॉ दैट राइट एंगल ट्रायंगल. ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है. ठीक है. He said right angle triangle at B. So let's name them. This is B. And he said AB is 24, BC is 7. This is 24 and BC is 7. Okay, the longer side is 24, the smaller side is 7. Okay. We have to find sin A cos A, sin C cos C. Okay. Now, whatever we understood in just previous slide, in this we are going to apply that particular thing. Okay. So let us first find a hypotenuse. में पता ही नहीं है. Without hypotenuse we can't find sin and cos. So let us calculate the value of hypotenuse. What is the value of hypotenuse? कैसे calculate करोगे? What is AC? You know that AC square is equal to AB square plus BC square from Pythagoras theorem. ठीक है. तो ये हो गया 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर. What is the square of 24? So it is 576 plus 49. कितना हो गया? 625. Now AC square is 625. Then AC is root of 625. AC will be equal to root of 625. कितना हो गया? 625 का root 25. 25 square is 625. So 625 का root is 25. ठीक है. Now he is asking sin A. Because यहाँ theta नहीं है, he is directly naming the angle as A. So for us, the angle is this particular thing, and he is also talking about C. So first he is asking sin A. So let us write that sin A. Sin A. What is that sin A? Opposite side. Which is the opposite side to A? देखो, ये है ना 7. Can you look at this? The side opposite to A is 7, right? So we will write 7 divided by hypotenuse. What is hypotenuse? 25. ठीक है. What is cos A? Which is the adjacent side to A? 24. ठीक है. So we can write 24 by 25. क्वेश्चन में नहीं पूछा है, but let us go ahead and also plot this. tan A. tan A की वैल्यू कितनी है? 7 divided by 24. Opposite by adjacent. Clear? Now sin C cos C पूछ रहा है. Let us see sin C cos C. Sin C, which is the angle, which is the side opposite to C? 24. दिख रहा है? You can see C यहाँ पर है, इसके opposite में ठीक ये वाला 24 है, right? So because sin is opposite by hypotenuse, so it is 24 by 25. What is cos C? Cos C is 7 divided by 25. Because 7 is adjacent to C. 7 divided by 25. And what is tan C? Tan C is 7 divided by 20. Oh no, this is wrong. Tan C, opposite by adjacent. So it becomes 24 by
7। ठीक है, क्लियर? ये समझ में आ गया? नोट कर लो इसे। ठीक है, पॉज करके नोट करो। डन, गुड। सो लेट्स मूव एड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन आ गया, साइन ए इज इक्वल टू 3/4 वैल्यू ऑफ कॉस ए एंड टैन ए। तो कैसे करेंगे? अभी तो हमने आइडेंटिटी सीखी नहीं है, तो वी हैव टू गो थ्रू द ट्रायंगल मॉडल ओनली। ट्रायंगल बना लो क्विकली से। सिंस इज गिवन ए, तो हम इसको ए मार्क कर लेते हैं। दिस इज अवर ए। तो साइन ऑफ ए इज 3/4, opposite side by hypotenuse, that means this is 3 and this is 4. Now this side is not known to us, right? So this side is value will be root of hypotenuse square minus this square. So this side we have to find this side. Okay, let it be equal to x. So x will be equal to root of 4 square minus 3 square from Pythagoras theorem. 16 minus 9, how much is that? That is root of 16 minus 9, which is root of 7. ठीक है ना, root of 7। ठीक, तो ये चीज हो गया हमारा, x की वैल्यू कितनी हो गई? √7। So let us plug it off. This is √7 for us. We just found that it is √7. Now he is asking cos A. Cos A, what is cos A? चलो देख के बता दो। Cos A, adjacent side divided by hypotenuse. Who is adjacent side here? √7. So it is √7 divided by hypotenuse, which is 4. ठीक है, and tan A पूछ रहा है। tan A, tan A is opposite divided by adjacent. So 3/√7. ठीक है, क्लियर? इजी था, नोट कर लो, पॉज करो, नोट करो। ठीक है, so let's move ahead. Given 15 cot A is equal to 8, he is asking this value. अब ये क्या है? ये हमारे लिए कोई नई चीज है ना। तो 15 cot A, तो सबसे पहले इस पे काम कर लेते हैं। 15 cot A can be written as 15 cot A is equal to 8। ठीक है, तो ये 15 को नीचे ले जाओ, यहाँ पे ट्रांसपोज कर दो 8 के नीचे। क्या हो जाएगा? cot A is equal to 8/15। ठीक है, तो tan A becomes 15/8। ठीक है, tan बहुत इजी है ना समझने में, cot उसका रेसिप्रोकल है, सो tan is reciprocal of cot, तो make it tan A. Now make a triangle, छोटा सा triangle, you make it here like this. Plot your angle. This is A, and we are talking of tan A. Tan A is opposite side by adjacent side, 8. जोड़ लेते हैं। Now we don't have this hypotenuse. Sine and secant के लिए you need this. All the values should be known. So what is this value? Let it be x. So x is equal to root of 15 square plus 8 square, which is root of 225 plus 64, which is 9, 8, 289. 17 into 17 square is 289 ना। Yes. So 17 square is 289, वो कंफर्म हमने कर लिया। ठीक है, कभी डाउट में नहीं रहना, आप भी कर लेना कंफर्म। ठीक है, तो 289 का अंडर रूट विच इज 17, तो इसकी वैल्यू हमें मिल गई 17। ठीक है, नाउ साइन ए, साइन ए इज 15 divided by 17, opposite side divided by hypotenuse, it will be 15/17। ठीक है, अब सीकेंट ए पूछ रहा है। सीकेंट ए किसका रेसिप्रोकल है? कॉस ए का। तो पहले कॉस ए की वैल्यू निकाल लो। कॉस ए वैल्यू कितनी है बोलो? 8/17। देयरफॉर सीकेंट ए क्या होगा?
1 बाई cos A कमिंग हियर, तो यहाँ लिख देता हूँ therefore secant A is equal to 17 by 8 because it is reciprocal of cos. Clear? समझ में आ गया? Can we go to the next one? If cot, he is telling cot of theta is 7 by 8 and we have to solve this. ठीक है? तो पहले तो देखो ये चीज है, इसको we can write it as this is in form of a plus b into a minus b, so it is 1 square minus sin theta whole square, we can write it, and this is 1 square minus cos theta whole square. कैसे लिख लिया मैंने? a plus b into a minus b is what? a square minus b square. ठीक है? You understand this, right? So we have converted this. Now we only have to find our sin theta and cos theta value and put it here, and our job is done. So let us go ahead and do it. Cot theta की value इसने दी हुई है, so let us go and plot our triangle. If this is theta, if cot theta is 7 by 8, tan theta कितना होगा बच्चा? Tan theta will be 8 by 7. So इसको लिख लो 8 and this is 7. ठीक है? This is 8 and 7. Right? इस क्वेश्चन को आगे चल के सीखेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा, बट सिंस वी आर ट्राई लर्निंग तो पहले हम ट्रायंगल मॉडल में ही करेंगे. इसको एक शॉर्टकट फॉर्मूलेज होते हैं, बट वी आर गोइंग टू सॉल्व विद दिस ट्रायंगल मॉडल. तो व्हाट इज दिस साइड? पहले तो ये साइड की वैल्यू निकाल लेते हैं. व्हाट इज दिस साइड? हाइपोटेन्यूज. वी डोंट नो द हाइपोटेन्यूज. विदाउट हाइपोटेन्यूज यू कांट फाइंड योर साइन एंड कॉस. तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाल लो. h इज इक्वल टू रूट ऑफ 8 square plus 7 square, which is root of 64 plus 49. Clear? Now what is this 64 plus 49? 10 plus 13, so it is root of 113. It doesn't have a root. This doesn't have a root. तो आगे बढ़ जाते हैं, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे. इसको लेट अस राइट रूट ऑफ 113. तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई बताओ? साइन थीटा इज 8 बाई रूट 113 एंड कॉस थीटा कितना हो गया? 7 डिवाइड बाई रूट ऑफ 113. लेट अस सब्स्टिट्यूट ऑल दिस वैल्यूज. ये जो हमारे पास वैल्यूज आई हैं, लेट अस सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन. तो बिकॉज स्क्वायर है तो ये 1 स्क्वायर इज 1 माइनस साइन थीटा इज 8 बाई रूट 113 होल स्क्वायर. ठीक है? एंड दिस इज 1 माइनस 7 बाई रूट 113 होल स्क्वायर. ये क्या हो गया? तो चलो 1 माइनस 64 बाई 113, 1 माइनस 49 बाई 113. अब इसके बाद तो वो खेल है, आप लोग खेले. 113 दिस इज, तो एलसीएम ले लो ऊपर नीचे दोनों जगह. तो ये क्या हो जाएगा? 113 माइनस 64 डिवाइड बाई 113, और ये हो जाएगा 113 माइनस 49 बाई 113. तो ये 113 तो कैंसिल हो गया, राइट? तो फाइनल आंसर क्या बच गया अपने पास? 113 minus 64 and 113 minus 49. So this is 49. 113 minus 64 is 49 and 113 minus 49 is 64. So this is the value, final answer which we wanted. Okay? Quite easy, right? So first what we have to do, find the value of sin theta cos theta and put it in the जो भी इक्वेशन हमको दिया हुआ है सिंप्लीफाई करने के लिए. ठीक है? लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ ही इज आस्किंग अस टू चेक. ही हैज गिवन टू थिंग्स, वन लेफ्ट हैंड साइड एंड वन राइट हैंड साइड, बोथ आर इक्वल और नॉट, एंड ही हैज गिवन सम वैल्यू. लेट अस पुट सी व्हाट इट इज. ठीक है? तो लेट अस ड्रॉ आवर ट्रायंगल फर्स्ट. सी ये एंगल ए है, तो
ये एंगल ए है, ही इज टेलिंग कॉट 3 कॉट थीटा। तो पहले तो समझ लो 3 कॉट थीटा इज इक्वल टू 4, सो कॉट थीटा विल बी इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 3, 3 ट्रांसपोज होके नीचे आ जाएगा ना, cot theta is 4 by 3, so that means this is 4, this is 3. So what is the hypotenuse? 4 3 root of 4 square plus 3 square कितना होता है? Root of 4 square plus 3 square, which is 16 plus 9 25, and root of 25 is 5. So hypotenuse की value how much it is? 5. So tan theta is 3 by 4, वो तो हमको यहाँ से ही पता चलता है रेसिप्रोकल, ठीक है, क्योंकि साइन कॉस के लिए या राइट साइड में चाहिए ना, tan थीटा इतना हो गया। तो लेट अस डू LHS, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस 3 by 4 होल स्क्वायर बाई 1 माइनस 3 by 4 होल स्क्वायर, ये प्लस है, ठीक है, वैल्यू कितनी आ गई? 1 माइनस 9 बाई 16, 1 प्लस 9 बाई 16, हाउ मच इज दिस? 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 बाई 9, एंड दिस इज 16 प्लस 9 बाई 9, 9 9 गोज ऑफ, वैल्यू कितना आ गया LHS का वैल्यू? 16 माइनस 9 इज 7, ठीक है, and 25. So LHS value has come as 7 by 25. ठीक है, am I right? Yes, it is 7 by 25. RHS देखते हैं, RHS चेक करके देखते हैं. Now let us see RHS. He is telling cos square A. Cos square A minus sin square A. ठीक है, तो cos square A की वैल्यू कितनी है? Cos की वैल्यू है 4 by 5. So it is 4 by 5 whole square minus sin square A. तो sin square A की वैल्यू कितनी है? 3 by 5 whole square. 3 by 5 whole square. So again it is 16 by 25 minus 9 by 25, which is 16 minus 9 by 25, which is 7 by 25. ठीक है, ये नहीं दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ लिख लेता हूँ, ये है 7 by 25, ठीक है ना। So LHS is equal to RHS, hence proved LHS is equal to RHS. ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है, इजी है, कोई मुश्किल नहीं है ना, ठीक है। तो कॉपी कर रहे हो, आई होप यू गाइज आर कॉपिंग एंड नोटिंग डाउन थिंग्स, ठीक है। नाउ लेट अस सी दिस क्वेश्चन, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, राइट। फिर इसके आगे जाके देन वी विल लर्न द एडवांस लेवल थिंग्स लाइक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, value of each and every angle like 0, 30, 45. Then we will also see identities and application of trigonometry. But today's session was, objective of today's session was to make you, introduce you to the ratios sin theta, cos theta and tan theta and reciprocal of them, cosecant theta, secant theta and cot theta. Okay. So let us go ahead and do this question first. So he is telling tan A is 1 by root 3. तो सबसे पहले आप ट्रायंगल बना लो अपना, ये ट्रायंगल यहाँ बना लो, ही इज टेलिंग, और इसको ए कर लो, tan A is opposite side by base, so this is 1 and this is root 3. तो ये कितना हो जाएगा? रूट ऑफ रूट 3 होल स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, which is 3 plus 1 4 and 4 का रूट इज 2, ठीक है, क्लियर। सो व्हाट इज, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें, फर्स्ट वाली की। लेट अस डू दिस। What is value of sin A? Sin A is 1 by 2. Cos C, cos C की वैल्यू कितनी है? So ये B लिख लो और ये C लिख लो। Cos C is 1 by 2. है ना? So let us put this value and cos A. Cos A की वैल्यू कितनी है? रूट 3 by 2. साइन ए की वैल्यू कितनी है?
साइन सी की वैल्यू कितनी है √3/2 ठीक है so let's put this values here 1/2 into 1/2 sin A into cos C plus √3/2 into √3/2 value is 1/4 plus 3/4 which is 4/4 which is 1 so first answer is 1 ठीक है clear ऐसे ही सिमिलरली लेट अस डू सेकंड वन cos A की वैल्यू डायरेक्टली लिखते हैं cos A इज √3/2 ये वाला क्वेश्चन करो cos C इज 1/2 cos A is √3/2 cos C is 1/2 minus sin A is 1/2 and sin C is √3/2 into √3/2 तो ये कितना हो गया √3/4 minus √3/4 आंसर इज 0 ठीक है समझ में आया सो पॉज करो नोट करो ठीक है So children, I hope you have understood about the basics of trigonometry where we have explained and understood what are the name of the sides of the triangle, opposite side किसको बोलते हैं, adjacent side किसको बोलते हैं, hypotenuse किसको बोलते हैं. Then we have also tried to understand the ratios, name of the ratios. Sin theta is opposite side divided by hypotenuse. Cos theta, adjacent side divided by hypotenuse. Tan theta, opposite side by adjacent side, and their reciprocals. We also understood the relation of complementary angles, and we did some exercises. I hope this has brought you some clarity on trigonometry. It's not very hard, it's very very simple. So आप लोग इसको practice करो, go to your textbooks and your guide books like R.D. Sharma and R.S. Agrawal. कोई भी doubt आता है, you can mail me on my mail ID which will be given at the end of this video. So and subscribe and share my video. शेयर करो फ्रेंड्स से, अगर अच्छा लगा तो शेयर करो, अगर अच्छा नहीं लगा तो मुझे कमेंट करके बताओ कि क्यों अच्छा नहीं लगा एंड what improvements you need in my video. ठीक है समझ में आया so let's go ahead and we'll see you in the next video with advanced trigonometry.